जैसे फिट होने का सवाल आता है वैसे ही हमारे मन में एक जवाब आता है, उसका नाम है जिम। हम सब अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं और हमें सिर्फ बॉडी की फिटनेस ही समझ आती है, लेकिन हमारे ब्रेन का क्या, हमारे दिमाग का क्या? दिमाग की एक्सरसाइज कौन करवाएगा? कौन कहेगा कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में दिमाग को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज रोज़ करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप सबका स्वागत है टेक गुरु में। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो आपके दिमाग की सॉलिड एक्सरसाइज करवाने वाला है। हमारा जो पहला ऐप है वो है lumosity। lumosity काफ़ी हाई फाई नाम लग रहा है ना, लेकिन इसकी लर्निंग भी उतनी ज़्यादा हाई है। यानी कि आप एक एक फिट टेस्ट करते जाइए और सारे टेस्ट में आप पास होते जाइए, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स की बदौलत आपको ये समझ आएगा कि हाँ, फाइनली मेरे दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.4 स्टार्स मिले हैं, काफ़ी हाई रेटिंग है। यूजर्स का ये भी मानना है कि ऐप काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी ना सबसे बुरी बात ये है कि ये ना कभी कभी फन थोड़ा कम कर देता है। इसका जो फन फैक्टर है वो कहीं पीछे रह जाता है और जो इसका लर्निंग है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में इस ऐप के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपको पॉइंट्स देता है ना, वो खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उन पॉइंट्स के लालच के चक्कर में हम अपने 15 मिनट तो ज़रूर इस पर लगा देते हैं। चलिए अब हम हमारे अगले ऐप पे आते हैं। वैसे तो मेरे ऐप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यूज़ करते वक्त। इसका नाम है ब्रेन HQ। मैं इसके प्रीमियम वर्जन पे आ जाती हूँ सीधा, क्योंकि इसके फीचर्स काफ़ी पिछले वाले से सिमिलर हैं। लेकिन इसमें जो खास बात यानी इसका USP जो है वो ये है कि ये इम्पेयर्ड लोगों के लिए काफ़ी काम आता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये ऐप काफ़ी बढ़िया है इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही में इस ऐप से आप खुद की ट्रेनिंग खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए वो भी इस यहाँ पे क्यूरेट किया जा सकता है। जब मैंने पिछले पुराने 2 ऐप्स इस्तेमाल किए तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे आपको अपने पिटारे में से एक और बेस्ट ऐप देना ही होगा, जो ऐप आपको ये कह दे कि हाँ, इससे हमारी ब्रेन की एजिलिटी भी ज़्यादा हो रही है, हमें मज़ा भी आ रहा है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों से। तो फिर नाम आया मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद न्यूरोबिक्स 60 ब्रेन गेम्स वाला ऐप। इस ऐप को यूज़र्स ने गूगल प्ले स्टोर पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाले स्टार्स दिए हैं। पहले उन्होंने 3.9 स्टार्स दिए, फिर 4.2 स्टार्स, फिर उसके बाद 4.4 स्टार्स। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ इसके जो फीचर्स हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किए हैं, यानी कि आपको पूरी गारंटी मिलती है कि आपके ब्रेन का एक्सरसाइज करवाने वाला है। ये ऐप काफ़ी ज़्यादा फन लविंग है, यूज़र्स इसे काफ़ी इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको इस ऐप के गेम्स को खेलना अच्छे से आना चाहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे और ऐप्स के। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐप अपडेट के इस सेगमेंट में और सारे ऐप्स के बारे में जानना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, तो आप हमें सोशल मीडिया में अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में एडवाइस दे सकते हैं, आपकी कोई डिमांड है आप वो भी बता सकते हैं। इस साल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES के दौरान हमने वेगस में काफी नया और इंटरेस्टिंग टेक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। कई बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और इसी के साथ साथ इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स और कॉन्सेप्ट डिवाइसेस कंज्यूमर्स के सामने रखे। हमने अपने CES विजिट के दौरान उन्हें कवर भी किया, पर कैसे आने वाले दिनों में ये इनोवेशंस टेक की दुनिया को बदलने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रायन कमिंस्की, मैनेजर ऑफ इंडस्ट्री इंटेलिजेंस एट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन यानी CTA, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो CES को हर साल ऑर्गेनाइज करती है। What are some of the key trends that you spotted at this year's CES that have set the tone for the tech year that we're going to have 2023? Yeah, of course. So three jump to mind really. One is the stepping stones of the metaverse were really clearly on display at CES. So when we think about how the metaverse is going to form, it starts with AR and VR applications. So we saw a lot of advancements in AR through systems like Magic Leap
as well as VR with headsets from Sony showcase. But they were taking to that next level with seeing for the first time things like digital scent incorporated into virtual reality. So it's no longer just about immersive sound and audio and visuals. It's also, we're seeing smell, which has about a 77% impact on daily memories. So seeing how much more immersive the metaverse is already starting to become, and what are those applications like, from healthcare to training to other just forms of consumer entertainment. So that was the first one. Secondly, healthcare really was, stole the show in a lot of ways, where we've moved on from wearables like the one on my wrist that are tracking glucose or steps per day, to new wearable devices from those like SK that were showcasing glasses that you could wear that had biomonitoring detection signals to predict seizures. And then finally, West Hall was sold out essentially, and we saw the future of automotive and other mobility solutions, from macro mobility to micro mobility, really showcasing the range from electric vehicles, whether they be on land, sea, or air, and then autonomous vehicles. So what's the future of smart mobility going to look like? Okay. And which theme or which trend did loom large according to you? As you mentioned, the entire West Hall was full of mostly electric mobility, mostly sustainable mobility is what, that entire space was speaking about. So do you think that was like, sustainability, sustainable use of tech, for a better future for us was one of the larger themes? Yeah, I would say this is really the first show that had an overall unifying theme, which was really around how is tech solving the world's biggest challenges, right? So as you've mentioned, electric vehicles are a key step in that, with the more sustainable focus on less emissions from automotives. But LG and Samsung, for example, made sustainability the focus of their media day presentations before their products. So really, that was one angle. We saw how solutions are going to help food insecurity, like underwater farms, as Siemens is helping accelerate those plans. So I would say sustainability is a part of just that overall theme, which is, how is tech solving the major challenges and improving our daily lives? And I came back with a lot of learnings from Vegas, to be honest. What, according to you, were your key learnings from this year's CES, Brian? That's a really good question. When I go back to the metaverse, as I said, I really like to touch upon, it's about those building blocks. I think we have a tendency to jump to thinking it's like the movie Ready Player One, where we're in this immersive gaming environment immediately upon putting the headset. But no, I was thinking about the solutions on a daily basis that you can see today from the metaverse. So when we talk about that headset that allows digital scent, the training applications that they're already using it for is for surgery, for example. So when you think about training a surgeon through VR, you can get all the motions, you can get the sights and the sounds, but if you add scent, which is such a visceral human sense, you really start to get people trained for what are high intensity and pressure moments. And that's just the doorway to a lot of other applications. One of my favorite things is learning just how VR is helping therapy. So if you have a phobia, they now are putting people into VR headsets, and you can accelerate someone like myself who's very afraid of spiders. We can go from severe phobias in a matter of, I think, 5 weeks down to a mild fear. So just thinking about the applications there, that's the stepping stone to something that is really just the next generation of the internet. And it's quite exciting. Perfect. Thank you so much. Thanks for joining us today, Brian. Of course, thank you so much. And thank you so much for coming to CES. It was great to see so many faces back. Thanks. Bye-bye.